Good morning, everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, I hope you all have celebrated your Deepavali with joy. After holidays, today we are going to start with our new syllabus. That is clear to all of you. There are so many students that have given the exam in very good manner, but there are so many students who has not given the exam in good manner. Okay, so only those students have given the exam in good manner who were added and they joined the classes regularly. Okay, and the students who have not joined the classes regularly, they have not given the test properly. जो डेली क्लास ज्वाइन किए थे, जो डेली आते थे क्लास में, उन्होंने पेपर बहुत अच्छा किया है. एंड यस, और जो नहीं आते थे, जो रेगुलर ज्वाइन नहीं करते थे, उन्होंने बहुत पुअर वर्क दिया है, करके दिया है. तो दिस इज़ नॉट द राइट वे. एक्चुअली आपका ही टेस्ट है, आपको ही देना है. इट्स योर वर्क. ओके, सो इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर वर्क. इट्स नॉट माइन. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स who always ask about the PDF at the time of examinations. What is this? There are so many students. Why you did that? This is not the right way. And how we will provide you so many PDF at that time? Okay, 3 months का जो वर्क होता है वो हम आपको एक साथ कैसे दे सकते हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब ये आपका प्रॉब्लम है, आप क्यों लेट हुए हैं, आपने क्यों नहीं टाइमली वर्क किया. सो द स्टूडेंट्स who are added in the group from today, they listen very carefully. From today I don't want to see such type of things. Okay, after completing one chapter, all teachers will provide you PDF and it's your duty and it is compulsory to complete the work after that PDF. Okay, that is clear to all of you. After giving one time, I will not give you PDF again. I'm not talking only about me, I'm talking about all the teachers. अगर टीचर ने एक बार PDF दे दी है तो सेकेंड टाइम नहीं देगा टीचर. आपको वह करना हो करिए, नहीं करना हो नहीं करिए, क्योंकि आप लोग वही चीज़ 10 बार मांगते हो और फिर भी वर्क नहीं करते हो नीट एंड क्लीन. और जिनको करना है उन्होंने करके दिया है. सो वर्क आपको एक बार PDF दी गई है, आपके फ़ोन में रहती है, आप उसको करिए. आप क्यों डिलीट करते हैं, क्यों इधर? और डिलीट आपको करनी है. इतना ज़्यादा तो वर्क रहता नहीं है, सॉरी. तो आप जब आपको PDF मिल जाती है, आप ये बोलते हो, कई लोग कि फादर लेके जाते हैं फ़ोन, मदर लेके जाती है, मुझे मिलता नहीं. एट द इवनिंग यू गॉट योर फ़ोन. ठीक है, आपको मिल गया आपका फ़ोन इवनिंग में, तब आप कर सकते हो. सो जिनके फादर या मदर लेके जाते हैं वो इवनिंग में फ़ोन को एक बार चेक कर ले, अपने ग्रुप को चेक कर ले. उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारा PDF मिल जाएगा. जब वर्क आपको सेंड किया जाएगा, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए. कितना टाइम वर्क कंप्लीट करने में लगेगा? अगर आप डेली करेंगे तो इतना सारा वर्क एक साथ कलेक्ट नहीं होगा. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ कम टू द syllabus. So as you all know that we have completed our half yearly exams before it. So today we will move forward to our PT2 syllabus. So before starting this, everybody mention the date 17/11/2020. After that, write the thought, THOUGHT, write the heading thought and underline. So write the heading thought in 2 lines. After that, come at the center of the page and write, a well-educated mind will always have more questions than answers. A well-educated mind, जो well-educated mind होता है, will always have more question. उसमें क्या आता है? जो एक educated mind होता है, उसमें हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. किसकी अपेक्षा? आंसर की अपेक्षा. दैट मीन्स जो एक एजुकेटेड माइंड होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा करता है और आंसर उसके कंपैरिजन में कम करता है. सो अ वेल एजुकेटेड माइंड will always have more questions than answers. And listen very carefully, the writing should be very neat and clean, and everybody start the thought with the starting inverted comma, after that full stop and inverted comma close, and come to the next line and write Helen Keller. Whose thought is this? Who has given this quote? So this quote is given by the Helen Keller. ठीक है, Helen Keller ने ये कोट दिया है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोट एंड एवरीबडी राइट द थॉट एट द सेंटर ऑफ द पेज. द थॉट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द पेज. एवरीबडी राइट एट द सेंटर, एंड आफ्टर दैट
Okay, after that cover it in a box. That is clear to all of you. So in this manner you all will write the thought. After that come to the next page and write PT2 course start. Everybody write like this on the left side of the page, PT2 course start with a smiley. That is clear to all of you. Now come to the syllabus. So after that write the, come to the next page, that means right side, and write in bold. Okay, syllabus of PT2, and then make underline with the black sketch. Then again leave 3 lines and then write the next heading, tentative date. Okay, in bold in 2 lines. After that again leave 3 lines and write chapter 9. What is the chapter 9? Proud Froggy. The name of the chapter 9 is Proud Froggy, and you can see here I have written P in capital and F in capital. After that chapter 10, Emperor Penguins. Okay, as you can see I have written E in capital, P in capital. Chapter 11, The Little Kite Learns to Fly. The little kite learns to fly. As you can see in each word I have written first letter in capital. Okay, after that chapter 12, the story of Magna Carta. The story of Magna Carta. So in PT2 syllabus we will complete 4 chapter, chapter 9, 10, 11 and 12. That is clear to all of you. So everybody write this syllabus and thought in good manner, in good handwriting like me, and also underline your work. And one more important thing is that everybody write in line. That means ए के नीचे बिल्कुल वेल के नीचे क्यों, ऐसे ना एक सीरीज में लाइक दिस ये जो होगा ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए. दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So if you are able to write from the video, then you will write. If you are unable to write with the help of video, then I will provide you PDF after completing my this chapter. That is clear to you. So that is enough for the today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.